ना कि हमने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हमने फेस किया, हमने मोर देन 20 इंटरव्यू मैंने दिया हुआ लास्ट 1 to 2 मंथ, ठीक ना। तो क्या होता है ना कि बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा जावा 8 पे आपने काम किया है क्या। अच्छा जावा 8 क्यों इतना पॉपुलर है, मतलब कि बहुत लोग इससे जावा 8 पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जावा 8 में मेजर एडवांसमेंट हुआ था, है ना। जावा 8 में सबसे पहले, हमारा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? ओके लेट मी शेयर फर्स्ट, आई थिंक आई एम नॉट शेयरिंग इट। सो नहीं दिख रहा आपका पंकज भाई? हाँ कर रहे शेयर। तो जावा 8 में ना बहुत सारा, जिसमें अभी बड़ा बड़ा कंपनी है जो टेक जाइंट है ना, जैसे में जेपी मॉर्गन हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, जितना भी मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी लोग क्या करते हैं ना कि मैक्सिमम उन लोग का जो भी एप्लीकेशन है उस समय का जो डेवलप हुआ है वो जावा 8 पे ही है। तो वो लोग ज़्यादातर मतलब खोजते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो जावा 8 पे काम किया हो, क्योंकि अगर जावा 11 का आप फंक्शन लिखोगे, है ना, चाहे जावा मतलब कि 19 का अभी तो आ गया है, तो उसका कुछ लिखोगे तो उस पर रन ही नहीं करेगा, है ना। तो नो क्लास फाउंड करके आएगा कि ऐसा मतलब कुछ डिफिनेशन ही नहीं है इसमें। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक मेजर जो एडवांसमेंट हुआ था ना जावा 8 में, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्लाइड मैंने नहीं बनाया है, लेकिन हाँ हमें प्रॉपर स्लाइड बना के आप लोगों को शेयर करेगा। सो जो मेजर एडवांसमेंट हुआ था, सबसे पहले एक और हाँ, सो जो मेजर एडवांसमेंट हुआ था वो हम पॉइंट वाइज हम बता देंगे और उसको करके प्रैक्टिकल में सीखेंगे, और एक इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे डेली। आज एक इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड है, अब एडवांस जावा एडवांस का बैच ख़त्म कर रहे हैं, तो बहुत लोग इंटरव्यू के लिए अटैम्प्ट करेगा। सो डेली एक हम लोग क्या होगा ना कि प्रॉपर डिस्कशन होगा, रियल मतलब कि अभी क्या है ना कि लीड कोड का अगर आप क्वेश्चन कह रहे हो तो एग्जैक्टली नहीं पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी वो आना चाहिए वो डाटा स्ट्रक्चर। कोई ट्राई से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग ट्राई पढ़ा ही नहीं होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा, है ना। तो बहुत रेयर केस में आता है कि हाँ आप अगर हमको प्रीफिक्स निकालना है तो ट्राइज का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो काम चल जाता है, दूसरा कोई भी डाटा स्ट्रक्चर का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, आप लोगों ने, हमको मालूम है कि ऐसा बहुत सारा आप लोगों को सिंपल लगेगा, लेकिन हम कैसे जावा 8 का स्पेशल फीचर इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर दें। जैसे हमने क्या दिया कि एक इनपुट स्ट्रिंग दिया रहेगा, है ना। स्ट्रिंग सपोज करिए जैसे मैं इनपुट में दिया है ना, जैसे मैं एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, हेलो मैम हाउ आर यू। और इंटरव्यू में हमको एक क्वेश्चन आया था हमारा मास्टर कार्ड का, जब हम इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक ना, उसका भी मतलब कि क्लियर हो चुका है, थोड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा निगोशिएशन चल रहा है, तो 1-2 दिन के अंदर शायद हो सकता है कुछ अच्छा न्यूज़ मिले। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, और एग्जामिनर ने हमसे पूछा था कि पंकज राइट अ कोड दैट इट विल बी चेक ईच वर्ड whether this is palindrome or not. If it is a palindrome, then return. Okay, otherwise then print that this is ma'am is a palindrome. So what will be your approach? Tell me. Anyone can host. Unmute yourself. And don't feel like I am not teacher. I am also your batchmate. So be like frankly, just tell anything, whatever you feel. सबसे पहले तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा स्पेस को पैरामीटर रख के। हाँ, उसके बाद में जो अरे आएगा उसमें इंडिविजुअल को चेक करूंगा कि पैलिंड्रोम है या नहीं। हाँ ना, ये जो है बेटर तरीका, लेकिन स्प्लिट जो आया है, जो इंटरनल जो एपीआई एनहांसमेंट हुआ था, जैसे में इटरेटर आया था, स्प्लिट आया था, स्ट्रीम आया था, फॉर ईच आया था, ये सब किसका फ्यूचर है? जावा 8 का, है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप स्प्लिट का कोई फंक्शन है नहीं जानते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग स्प्लिट करते हैं, तो आदमी क्या करेगा, हर एक वर्ड को चेक करेगा, हर एक कैरेक्टर में जाएगा, मैच करेगा कि कहाँ पे स्पेस है, उसको नोटिफाई करेगा, उसके बाद से उसको चेकिंग करेगा, तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज थोड़ा सा कुछ थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद से कुछ क्या बोलते हैं और
प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जावा 8 का फीचर। तो जावा 8 में सबसे पहले आप लोग ना, कुछ लोग तो मतलब थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे जावा 8 फीचर्स। तो मेन जो फीचर है हम उसके बारे में बात करेंगे और इस पर हम लोग कुछ सीक्वेंस वीडियो करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला जो वाइडली इस्तेमाल होता है वो क्या है, जनरली हम लोग यूज करते हैं जावा 8 का क्या हो जाए, फंक्शनल इंटरफेस, है ना। और हम लोग चलिए लिखते हैं अच्छा, फंक्शनल इंटरफेस का क्यों ज़रूरत है, जब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में आएंगे। सबसे पहले आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन आता था कि जावा 8 का क्या क्या फीचर है, इन्हांसमेंट हुआ था उसको बताइए। तो ये आपको याद रहेगा तो आप इजीली बता सकते हो और अच्छा इंप्रेशन जमेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब इंटरव्यू के मतलब कि एकदम बिगनिंग में ही आता है ना। तो अगर आप बिगनिंग में ही अगर अच्छा से अगर रिप्लाई कर दिए ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब क्या होता है ना कि एक एटीट्यूड बन जाएगा एग्जामिनर का आपके ऊपर, तो थोड़ा सा और मतलब कूल डाउन हो के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सबसे हो गया फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस उसके बाद से क्या है, जावा लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना। जावा लैम्डा एक्सप्रेशन, सर लैम्डा कोई बता सकता है, थोड़ा सा ब्रीफ करो, कोई भी थोड़ा बहुत जानते ही हो कि हमको मालूम है, कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो तो बताएंगे ही। इसका क्यों इस्तेमाल करते थे हम, इसका क्या ज़रूरत था। मिराजुल, आई थिंक यू नो। मैंने यूज किया है लैम्डा एक्सप्रेशन, पूरा फंक्शन लिखने के बदले में एक स्टेटमेंट के तौर पे पूरा फंक्शन आ जाता है वहीं पे। हाँ, तो एक स्टेटमेंट, कोई ज्वाइनिंग कर रहा है क्या, अभी आ जा रहे हैं। अच्छा हाँ, किसी ने रिप्लाई किया, आई डोंट नो। अच्छा अमित है। अच्छा हाँ, तो क्या होता है ना कि पहले जैसे हम लोग मान लो कि हम लोग सिंपल सा हम लोग लिखते थे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए जावा में हम लोग कितना लाइन सब कोड लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड बनाएंगे, उस मेन मेथड के अंदर हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखो इसमें 4-5 लाइन हो गया। अब पाइथन में क्या होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही जावा में भी है और दूसरे भी लैंग्वेज में है। तो बहुत लोग थे तो फन उड़ाते थे जावा डेवलपर का, अरे यार तुम लोग का लैंग्वेज ऐसा वैसा है। तो और देखिए जावा पहले क्या वेल नोन था किसके लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, लेकिन एक चीज़ पर रिजिड होना, है ना। अगर आप यही बोल दो कि नहीं हम केवल वेज ही खाएंगे, कभी नॉन वेज खाएंगे नहीं, ऐसा होता है, बहुत लोग होता है, लेकिन उन लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं ना। कभी मान लो कि आप अमेरिका चले गए, चाहे कोई अदर कंट्री में चले गए, जैसे में वहाँ पे मतलब वेज का ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो आप तो स्ट्रगल करोगे ना। तो हमेशा रिजिड रहना तो सही बात नहीं। तो इसलिए जावा 8 में उन्होंने फीचर लाया जो कि एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता था, है ना। जैसे में हमने जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा बेसिक अगर जानते होगा तो उसमें एरो फंक्शन होता है ना। डायरेक्ट एरो लिख के आप मेथड लिख सकते थे। तो वैसा ही सिमिलर है, जैसे में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते थे और जावा में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं और जावा स्क्रिप्ट में बोलते हैं उसको एरो फंक्शन। उसके बाद से आया कि हम लोग जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग बहुत सारा, जैसे में एपीआई का इन्हांसमेंट हुआ, है ना। सो इंटरनल, जैसे हम इसको लिख सकते हैं इंटरनल डेट एपीआई वाज इंट्रोड्यूस। अच्छा, डेट एपीआई का ज़रूरत क्यों पड़ा। आप लोग अगर व्यक्ति अगर मान लीजिए कि दूसरा टाइम जोन में काम कर रहा है ना। जैसे मान लो कि कोई यूके के टाइम जोन के अनुसार काम कर रहा है, तो उन लोग का जनरली वर्क टाइम कितना होता है, 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे 10 बजे तक, है ना। ऐसे ही मान लो यूरोपियन हो गया, चाहे अमेरिकन टाइम जोन हो गया, सीधा नाइट में होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई कोड लिखा है और वो कोड पर मान लो कि कोई क्लाउड पर होस्ट रहेगा, या तो AWS पर रहेगा, या तो GCP पर रहेगा, या कोई आप डॉकर हब पर होस्ट किए रहोगे।
तो उसके लिए तो टाइम जोन तो मतलब कि वहाँ का रहेगा पर्टिकुलर, लेकिन हम मान लो कि इंडिया में देख रहे हैं और वो होस्टेड है अमेरिका में, तो हमारे लिए तो थोड़ा ट्रबल होगा। अगर मान लीजिए कोई आपको मीटिंग ही फिक्स कर दिया और बोल दिया कि 1 PM, है ना। अब 1 PM कर दिया, 1 PM किसका, IST के अनुसार कि अमेरिकन टाइम जोन के अनुसार, किसके अनुसार। तो इसमें क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए इन्होंने डेट एंड टाइम का एक API इंट्रोड्यूस किया जो कि ये चीज़ों को हैंडल करता था। ठीक, इसके बाद से हमने जो देखा मेथड रेफरेंस आया था, ठीक ना। इसके बाद हमने देखा था मेथड रेफरेंस का क्या होता था ना, कि और सॉर्टेड फॉर्म है ना। जो हम लोग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन देखा था ना, तो उससे भी सॉर्टेड फॉर्म, जैसे में हम लोग अगर कहीं पे अगर ऑनलाइन आप लोग कोड देखा होगा कहीं कहीं पे, तो अगर लीड कोड पे अगर किसी का सॉल्यूशन अगर देखते होंगे तो ऐसा करके कुछ फंक्शन लिखा रहता है। ऐसे में लिख देगा प्रिंट एलन, है ना, यहीं पे लिख देगा प्रिंट एलन, चाहे कोई मेथड आएगा मेथड 1 एंड देन इसके बाद से लिख देगा प्रिंट एलन। तो ये हो गया हमारा जो मेथड 1 है, ये रिफरेंस कर रहा है किसको, प्रिंट करने वाला है कुछ, ठीक ना। तो ये हो गया मेथड रेफरेंस। उसके बाद से हम क्या होता था कि कभी कभी बहुत दिक्कत होता था। जैसे मान लीजिए कि आपने रेस्ट API बनाया, कुछ जो पहले से ज्वाइन किए उनको मालूम है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर मतलब कि URL पे आप हिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ आपको मिल रहा है, आइटम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने HTTPS पे हिट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। जैसे हमने कंपनी rajli.com/API/students, और उसमें हम पर्टिकुलर स्टूडेंट का ID हम पास कर रहे हैं, चाहे किसी का नाम देख रहे हैं पंकज, है ना, पंकज लिख दिया, चाहे कोई पर्टिकुलर ID मैंने भर दिया 1 2 3। अब देखो, अब जब हम इसको हिट कर रहे हैं तो हमको कुछ रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा कि जाएगा इस डायरेक्टरी पे और चेक करेगा कि इस नाम से कोई स्टूडेंट है कि नहीं, इस ID से। अगर मान लो कि अब यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है, या तो स्टूडेंट प्रेजेंट हो या तो ना प्रेजेंट हो। अब सोचो कि आपने उसको क्या किया, रिट्रीव कर रहा है कि स्टूडेंट प्रेजेंट है, और उसको कहीं मेथड में कॉल कर रहे हो, चाहे कहीं फ्रंट एंड पर दिखा रहे हो, लेकिन पता चला बैकएंड से तो आया ही नहीं वो डाटा, क्योंकि वो स्टूडेंट ही नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या होता है, दिक्कत होता है, नॉन पॉइंटेड एक्सेप्शन आता था, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, अच्छा एरे ही है, और एरे का लेंथ कुछ नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ नहीं डाले हैं, और एक एलिमेंट 1 एक्सेस करना चाह रहे हो, उसमें क्या आता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। लेकिन मान लो कि कुछ है ही नहीं, उसके अंदर नल है सपोज, और उसको अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उसमें क्या आता है, नल पॉइंट एक्सेप्शन डायरेक्ट शो कर देगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास आया था डिफ़ॉल्ट मेथड। सो डिफ़ॉल्ट मेथड में क्या होता था ना कि ऑप्शनल क्लास। सो ऑप्शनल क्लास में क्या होता है कि जैसे में हमने पहले जो भी यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम स्टूडेंट, जैसे में स्टूडेंट हमने जो भी मंगा रहे हैं, है ना, स्टूडेंट मान लो S1, और इसको हमने मान लो कुछ फेच कर रहे हैं, देखो जावास्क्रिप्ट के जैसे में कोड हम लिखना है, ऐसे में हमने URL पास किया, और ये हमारा समझो कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या कर देते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट लिख देंगे, चाहे ऑप्शनल क्लास लिख देंगे ऐसे, सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो स्टूडेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऑप्शनल ऐसे लिख सकते हैं, तो या तो स्टूडेंट आएगा तो ये हमारा वैलिड है, नहीं तो यहीं पे टर्मिनेट कर देगा, बोल देगा कि नल है, आगे एग्जीक्यूट मत कर। ठीक, तो इसको हम नोट कर देते हैं कि क्या हुआ था, ऑप्शनल क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे हम भी लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद से क्या और एडवांटेज हुआ था, तो पहले क्या होता था ना कि हैश मैप का इम्प्रूवमेंट हुआ था, है ना। तो कंकरेंट कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस। अच्छा, कंकरेंट कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्या होता था ना कि पहले हम लोग मान लो कि हमने कोई एरे हमने डिफाइन कर दिया, जैसे मैं इसको समझो, सबसे पहले हमने मान लो कि इसको हमने एरे डिफाइन कर लिया कुछ, जैसे मैं मान लो कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आपने एक चीज़ बहुत बार आपने सुना होगा, थ्रेड सेफ और थ्रेड अनसेफ। थ्रेड सेफ
और एक ऑप्शन होता है थ्रेड अनसेफ। अच्छा कौन सा ज़्यादा बेटर है, थ्रेड सेफ की थ्रेड अनसेफ? ऐसा इंटरव्यू में आप लोग बैठोगे तो इसे आएगा कि बताइए जो हैश मैप है थ्रेड सेफ है कि थ्रेड अनसेफ है। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझाते हैं थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कलेक्शन है, जैसे मैं एरे का हो गया, चाहे लिस्ट हो गया, चाहे हैश मैप हो गया। अब देखिए थ्रेड का मतलब क्या होता है कि जावा मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने बहुत सारा थ्रेड बना दिया। थ्रेड का मतलब कि पैरेलल प्रोसेस, एक बार में मल्टी प्रोसेस होगा। जैसे में हम लोग अगर डिवाइड एंड कंकर करके हम लोग जो सॉर्टिंग कर रहे थे, हाँ, तो उसमें भी हम लोग उसको डिफरेंट थ्रेड से करके माने डिफरेंट टूर के और जोड़ रहा है, तो वैसे थ्रेड सेफ। बस थ्रेड सेफ क्या होता है कि ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होता है ना। जितना भी मतलब कि पैरामीटर टाइप के है, इंटीजर और लाइक एरे और काइंड ऑफ एस्टिंग, दिस ऑल आर द थ्रेड सेफ। सो अगर आप थ्रेड सेफ अगर कोई किसी कलेक्शन को बना रहे हैं, इसका मतलब कि एक बार में मल्टीपल थ्रेड उस पर काम नहीं कर सकते, है ना। तो एक बार में अगर मल्टीपल थ्रेड काम नहीं करेंगे तो इशू क्या होगा, कि हमारा परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके घर में चाहे सपोज करो कि कैसे एग्जांपल है, समझो एक ब्रिक का रखा हुआ है और ब्रिक में एक आदमी को बोला जाए कि बस एक ही आदमी जाके उठा सकता है ब्रिक और लाके उधर रख सकता है, तो वो वाला काम ज़्यादा जल्दी फिनिश होगा। और या कि 10 आदमी एक बार जाए, मतलब कि अपना अपने एक ईंट ला के रख रहे हैं। अब ऐसी बात है जो ज़्यादा जो थ्रेड है, ज़्यादा लोग जाके लेके आ रहे हैं ब्रिक को, वो जल्दी काम फिनिश होगा टाइल्स। तो हमेशा देखिए थ्रेड सेफ में थोड़ा सा रिस्क होता है यूज करने के लिए। अगर थ्रेड अनसेफ रहता है डॉक्यूमेंट, तो क्या होता है कि बोटल नेक प्रॉब्लम आता है। ये सब हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग एडवांस हम लोग कवर करेंगे। तो बोटल नेक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक ही हर एक थ्रेड जो मतलब कि थ्रेड अनसेफ एलिमेंट होता है ना, उसमें भी एक सेगमेंट बांटा रहता है कि इस सेगमेंट को मान लो कि इस ईंटा जो इधर, मान लो कि इधर जो टाइल्स है वो फला आदमी लेकर जाएगा, person 1 will be take this side, like red tiles will be going to take this person, so there will be segmentation। ओके, ऐसा ना हो कि उसका टाइल्स उठा के उसमें जाके मिक्स कर दिया, हौच पौच हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, बोटलनेक इशू आ जाएगा। सपोज करिए वो टाइल्स उधर लेके आ रहा, पता चला कि वहाँ से उठा के कोई और इधर लेके चला जा रहा है, तो ऐसा अनसेफ सिचुएशन ना हो, तो उसके लिए क्या किया गया है कि थोड़ा सेगमेंट कर दिया गया। तो थ्रेड सेफ होता है, तो इसके लिए हम लोग हमने कंकरेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किए थे। क्या हुआ, कोई मैसेज किया? थ्रेड सेफ, थ्रेड अनसेफ, yeah, so thread safe code only manipulate the shared data, yeah, like share data which, like suppose no we can use on same collection also, like suppose I have created the some let's okay explain. I think you are not, I think there is quick sort algorithm you have learned, no? So in quick sort what you do, like there is a one array. Okay, I have already written in a sorted form, and what you do, you convert, like you divide this array into two part, okay, and then you try to sort it. Okay, again you divide this into two part and then try to sort it, and you break till its size is 1, and then you can easily compare which one is greater or which one is bigger. Okay, then you can directly do. Okay, this thing can be do using multi-threading, like divide and conquer can be do thread 1. Okay, this example I will do like when you are going for like MNC company, no, so they ask, okay, try to implement quick sort using the multi-thread. Or if you want like really curious about this, you search on YouTube also, you will get a lot of implementation. So you can use on the same share data itself, yeah. So like you can use the share data, and also you can make that one like that other person can also access, like other thread like can be also access that one. So like when you are going internally more in deeper, so there are internally the data is also divided into segmented. So same two different thread cannot access the same segment,
but yeah, in a collection they can work together. So for that there are introduction concurrent has map, concurrent has set. Okay, concurrent has map or concurrent has set, you can see that, or has set. So if you want to like know Drupal, I will share you the what called resources for it, or other we will take in a, like coming lectures. Okay, so these are introduced for performance enhancement. Okay, then there was also some internal enhancement for has map. Okay, so internally what was implemented, like early what like HasMap, how it was implemented, like HasMap of implemented using some array, like list of array. Okay, like last time, like Satya sir also like tell about the list of array. So first what will be happen, there will be a hash code will be generated, and that hash code is going to be stored in an array, and on each index array there will be list. Okay, now suppose I have added 1,000 list in a particular index. So suppose I want to get some particular element. So what will be time complexity? Time will be around order of n. Okay, so that is not good, but what we understand, like taking off, like getting element from hash map is, we generally understand order of 1. Okay, so here it is increasing time complexity. So how they implemented internally HasMap, what they do, that they use the conditional things. Okay, if my internal list size is greater than 8, okay, if internal list size is greater than 8, okay, so what they are going to do, they are going to converting into complete binary tree. So if I have converted something in a binary tree, like suppose there will be 100 element, okay, and I have like uses the complete binary tree, means like each things will be like, there will be each node have, there will be 2 child at least. Okay, so a last one can be like leave element can have cannot have, just can have 1 or 0, but at least like inner node should have at least 2 elements. So that will be called as a complete binary. So what will be happen, my time complexity of getting element will be from log of from order of n to reduce to log of n. Okay, are you getting my point? It is easily, because you are distributing in a binary tree, you are dividing by 2, so it will be simply 2 to the power n times, it will be equal to n, like 2 to the power k into n. So if you are taking anti-log of both sides, so it will become log of n. Okay, so if you want like parallel array sorting, so I can implement, but it will be little tough. So I will be going to do in like coming after 3 and 4 classes. Okay, and then okay, this much only. Let's do the practical things. Okay, then we will going to solve, because it's half an hour past. So let's do how we can do the stream API. Okay, to filter something or to do like sorting kind of things. Okay, so generally how people will be asked question, no? Let's suppose create a class student, a student dot, yeah. Okay, so let's make class. Okay, okay, so I have created one class. Okay, and in this class there will be some value. Okay, int roll number. Now you could realize how important is a stream API, and it is also taking a string name. Let's make it a smaller. Okay, so what I am doing that
I am creating a class name a student, and it's taking two parameters, roll number and name. Okay, name is like simple student name. Now let's create a constructor for that one. Okay, so what we can do, that public, and we can simply take the parameter to create the student, public student, and taking int roll number, and also taking a string name. Now let's map this parameter. So this dot name is equal to name. Okay, and then this dot roll number is equal to roll number. Now we have created the constructor. Now let's create some class. So like let's create some test, because we are creating multiple student and we are sorting using stream API. So let me save this one and push this code first to my repository. You can also download like pull this one and you can do the practice. Git add or then git commit Java 8, which is so if you want to do together, so I will just send you the git repo also. Why it is taking time? It is connected to internet or not. Yeah, so I will show you the repository here. So from here, like it is already pushed here, so you can go through and check the all things, all file, whatever I have written. Okay, these all things will be written here itself, and the explanation I will also update this one to better you can learn from there. So if you want to clone this one, I will share with the git repository in text message, or later on you just copy paste in your system, and after this class you try your own. Okay, let's do the things. Yeah, so I have created one class a student, and I have created a method which is taking a student name and roll number. Now let's create the test class. Okay, and there we will create couple of student and we will do the things. So test dot java, it is very important, so be little serious. And yeah, it's first time it will be like difficult to understand, but yeah, if you will do again and again, no, so you will habituated to do within one day. It is little tough to things, but yeah, if you have already done the DSA algo things, no, so there will be not any big issue. Okay, so let's create a one list. Okay, so in this one let's create a main method, main, and there I am creating a list. Okay, and list of a student. What I am creating, like I have already created the constructor of a student, so now I can use that one. So list of a student, and actually I have to import the these things. So let's import the package. In other ID it will be automatically who is coming right now. Okay, Gohar is coming right now. Welcome, Gora. So let's import the package first. So importing the list Java utils. Okay, so Java utils, and in this I am going to use list. Okay, so
let's do the import the list one. Okay, no need of separate. And also I am going to use my stream API, so yeah, we will do the import later. So let's create the student. Okay, so I have created a list of a student. 1 minute, someone is waiting there, I think. Okay, maybe he went. Okay, so I have created the student list. Okay, and let's suppose and name it as a list. Okay, equal to list of a stream we are creating. Okay, so like suppose we are creating array of lists, so it will be better to know how we can do the things. So new array of list. Acha, sometime no interviewer will be also asked, Pankaj, here you are using list and here you are using array of list. Why you are doing so? So can someone tell me why? It is a derived class, so it can directly it calls the constructor of the parent class directly. Yes. So like I will be independent to whether I can use array list or any other thing. So that's why it is better to use the generalized one. Okay, like suppose if you are creating hash map, so you don't write directly hash map. You just initialize with map and you pass the type, and then here you can write new hash map. Okay, so that is like good practice, nothing else. Okay, so we can also pass here, but it can be like taken from the student here, so we no need to pass here. It will be auto like generic kind of thing, so it will be going to take, but let's do that one. Okay, and then let's add some couple of student in our list. Okay, so what we will do, we will create a list dot add, simple as a list, like how we add in thing, and then we can give some new student. Okay, new student, and then we can pass roll number, let's 1, and I am mentioning some name like Pankaj or Mira. Why this collaborative? Yeah, done. Then let's add some more person. Then we can use like how we can use the stream API. New one, let's say student, roll number 2, and then we want to do name, it's like Amit. Okay, list, then add what we can do. It is better to copy this above and paste. I need to edit just few things. Control C. Okay, by manually it will be take a lot of time to do. So let's 1 2 3. Okay, and then do it 4, then let's do it 5, and let's do in the random order, that way we can sort. Okay, no problem, we can do the reverse order, and then change the Amit, then Mirajul. I hope your name is right. I don't mind if don't. Go her, I think. And then Ram Syam, it is a general name. Ram Syam. Generally we write Syam. Okay, so we have created couple of objects. Like you can do multiple way. You can create a object a student one. Okay, do like there will be other option also, like you can create, let's demonstrate that way also. Okay, so you will not confuse. So I will just control X and let's do things like I will do the generally what we do, how we do a student, we create a student. Okay, like we are calling the class and naming it object like a student1 equal to new student. Okay, and then
I will pass, I have created the object of a student S1 and then I am passing S1. So for shorthand, just I am just writing inside it the one. I hope it is clear. Hello. Yes, it is. Yeah. So now we will see how we can use the lambda. Suppose I am telling that okay, let's do this one ID something 1 2 3 random. Okay. Let's do 1 2 5. Why? Okay. So 1 2 5 3 and then 1 1 2 random like 300. Okay. Or let's do this 14. Okay, so like you can do anything. Then let's suppose 500. Okay, 505. And then someone saying that okay, Pankaj, do one thing, sort all the student in according to their increasing roll number. So generally without lambda expression, how you will do? You have created the collection, then you will iterate, you will try to find the minimum one, or you have to write the comparator class, then comparator class you are going to pass. Okay, and then you have to pass according to that comparator, you are going to sort, then you are going to print or anything, you are any operation you are going to do. So it will be like really lengthier portion. Okay, so I'm not going to use that one because we know the lambda expression, so we will use this one. So let's implementing using lambda. So lambda, so what we can do that, just we will create the stream API. So what we are going to do, we are going to use a stream, and of what, like suppose if you create an array or integer, so you can pass the type. So what type you are going to streaming, so it is a student type. Okay, and then what you want to do, so like suppose let's try to implement filter all the student which ID is less than 500. Okay, or which ID is less like greater than 200. So this kind of like we want to do. So what we can do, let's filter data. So let's suppose we are going to do some filtering, something kind of. So filter, let's suppose filter data. So data is equal to something. What we can do, because we are using the stream, so like it is a stream, like list is a kind of like non-primitive data type. If it is a primitive data type, so there is two way. Either you can create a stream of primitive data type like integer, array of integer, so that will be a primitive. So in that you can pass the stream like the data like array name itself in a stream. But right now we are using the method list, so we can create the stream like this one, a stream API. Now we can use the filter one. So what we can do, that I want to filter, yeah, and then you need to pass the like predicator. Okay, what is predicate? Like it will be also generally asked in interview. So predicate is like it is also kind of method which is going to take, and on the basis of that method it is going to check the validate the, like it is a kind of guard. Okay, like suppose on a security guard, like suppose in a bar or cafe, okay, or dance club, there is a bouncer will be standing there, and it will be check each person whether the person is like above 18 plus or not. If not, he will be returned back from here itself. So here I am creating a guard. Let's suppose my student is, and here I am using the lambda expression itself. Okay, and what I want to do, so a student dot what I want roll number. Okay, so a student roll number should greater than 200. Okay, so if a student roll number is greater than 200, those element only I want. Okay, sorry, actually I am getting call. So what I am doing, that I am streaming the data, and actually I have to import the stream. Yeah, a stream API already imported, so no problem in that. Now I have filter my data, so all which roll number is greater than 200 is going to be stored in my
filter data. So it is a use of one. Are you there? I think confirm me. Hello, am I audible? Otherwise, Yeah, you're audible. yeah. So what I have done, try to understand. I have done nothing, just I am using internal build of a stream. Okay, and we have created a student class, and I am filtering like filter data. And what I am doing, I am checking only the student whose roll number is greater than 200. You can check by like you have, suppose you have given the student age also, so you can check on the basis of student age. So my all stored data will be stored in my this collection. Now what we can do, this filter data is going to be written some list, okay, and it is stored in this one. Now we want to print this one. Again we will print using Java 8 also. So we are not going to iterate through the, we are going to write for loop for each list and do the iterator. We are not going to do this a lot of things. Just we are using the core Java 8. So in that what we are going to do, we are trying to use for each here. So like we are using for each. For each was also introduced there. For each and lambda here. Okay, so how we can implement? So first we want to write the filter data. Okay, and for filter data what I want to do, for each I want to use for each, and for each going to take consumer. So consumer is also like a it will be take some input, okay, and do the some certain kind of things, and it do not return anything. Okay, it is a ternary operator. Like after that we cannot cascade. I will do the things explain in more detail. Okay, so like suppose I have created for each, and in this for each what I am doing that, I am creating a student class. So let's create a simple student, or you can write so let's a student. And what I am doing to this student, I am taking this student and system.out. I am just printing this one out, a student. Okay, and we need to like sometime actually we need to print, because a student is a object. Okay, so we cannot print the student, otherwise it is going to print the memory address of this one. Okay, so either we have to convert into a string method, or either I can just, for knowing I am just printing a student name only. Okay, and here I know it because there is only one thing. So now if like this, just 2 lines of code, I will convert in just 1 line of code. Okay, we just see. Now if I will print, so what will be our expected output? All a student which roll number is greater than 200, it will going to print it. Mirajul, Ram and Syam. Okay, you can check. Mirajul has a roll number 300, Ram is roll number 505, and Syam is 250. Okay, so you know how precise this code is happening. Now sometime people will generally ask, I have given an array. It was also asked in my interview that they will give int array equal to something like, let's suppose 5, 10, 12. This is your homework. 56, 350. Okay, and they can ask, okay, don't use for loop, you have to use the specific Java 8, okay, a stream or filter, and you need to print just even number. The task is print even number, or they can also check how many even numbers are there inside the array. Okay, so using just a stream API, you can just filter out if like here you can do that. Like suppose I and I modulus of 2 is equal to if 0, then I am going to add inside this one. Okay, so that way you can do. Try to implement it. If you have any issue, just you can call me. Okay, now why I should use this separate line? I can do these things in a same line. Okay, so no need to use this one also. I can directly cut this one, and like in a
Java we can concatenate. Okay, we can add, so we can also do some addition also, so we can do like this one. Okay, so if I will, what is issue? Okay, so it is returning something, so that's why it is expecting some data. Otherwise I can do, no need to write this one because I am not storing. Yeah, so now see how simpler coding to check the difference. Okay, to know the difference, let's now do the whose roll number is less than 200 and then try to learn. So just one line of code we are capable to do this kind of things. What we are doing, first we are iterating through the list, we are filtering the element, then we are printing those element also. So like 3 things we are doing, just one line of code. If you want to do the iterative way, then you have created the collection, then you have to create the custom what called comparator, then you have to sort the my list, then after sorting the list, then you are going to you have to go to the iterate through the list, and then you have to create a new list, and you have to add those element which is greater than one, and then you are going to print. So these are the like you can do the things within the one line of code. So you can see Pankaj, Amit and Gohar is printing their roll number is less than 200. I hope this is understood. Are you getting this point? Hello? Yes, Pankaj bhai. Yeah, so I am pushing this code also, you can just check it out. Git add and git commit. I am committing Steam API demo git push. We have class from 9 no? Okay, till 8:30 I will take class, just 1 hour. We will just keep our classes just shorter period, 45 minutes to 1 hour, and we will do daily session. Okay, so now let's come to our problem, the interview problem. Okay, so generally what we are going to do, here is my main interview question. So like actually she asked like there will be given a string. Okay, so we are using regex. Okay, a library there. So in regex what I am doing that, if you are there is a string will be given. Let's do the from a starting, I think it will be better. So like suppose this thing will be given. I hope you will you all are able to write the function method for the checking string is palindrome or not. Just how you can write, just I have created the public static boolean each palindrome, it is taking a string as a parameter, and then I am storing its length str.length in my n, and then I am iterating through 0 and half of the length of the string. Okay, and then I am increasing my count, and I am checking if my ith character is not equal to my last character. Like suppose this is a 0, so this will be 0 and this will be n minus 1, like it will be last character. Okay, like suppose this will be h and this will be o. Okay, so if this will be not equal, directly here I am returning false. If it is equal and it is passing the whole things, then it means these are the palindrome. Okay, so I am returning true, and then I am creating, let's use the things here, because we have less time. So now what I am doing, I am using the regex things. Just it is like you can split your string on the basis of slash, backslash, n space. If you are not passing anything in your parameter, so it will become a character of arrays. Okay, so here I am passing the space, so it will be going to break all the
spaces element. Okay, so there will be hello will be one string, and then there will be ma'am, then will be how, and then are and you. These are the array. If you want to print the array, no, like let's print, you can see things, system.out input, so you can understand the things. And let's first uncomment two things. Okay, we need to comment only these. So these things, few things, if you are learning, so it will be very helpful for you. Like suppose let's cut this one and print after this one. Okay, so now if I will print, so it will print the string of array. So if I will run this one, so how are you are printing. Okay, it is using in a same line. Okay, because internally there will be one what called to print element is there in a print element, so that is converting the string and it is printing different way. If you want to see this one in a separate, so you can print in a for loop also, so you can get more clear. So let's create the for loop also. So or either you can use the string API also. So let's create this one time for loop. Int I is equal to 0, I less than AR length, and then I plus plus, and then I am printing the each element. So S out, and I am printing AR of I. I think I have already utilized, but yeah, that is a separate function. So no, there will be issue. Yeah, so now you can see these are the array. Now this is not a string anymore. Now these are the array of a string. Okay, so now if you want to print, like suppose if you are not passing anything, okay, so it will going to break through, it will going to make character of array. So each character will going to print it out. So just you are not giving anything, so it is going to print it out the character of array. So H, E, L, L, this will be printed in a line. So these small things will be going to help you a lot. So you can see now it is converted to character of array. Now you can converting with the character array, and then here is like someone asks you that Pankaj, or you have to reverse this string, okay, or count the character. So now just you have a split this one. Now you can iterate through the lambda expression, okay, and then you can count the each character wise, okay. Or either like suppose you have created the string, and then here you can like array dot reverse, okay, arrays. There is a method called arrays and dot reverse. I think there is some method I'm not able to find here. Okay, yeah, you can, I think there will be AR dot reverse, I think. Yeah, so there is direct method that you can directly use that one. So I hope my point is clear. Like you can use this regex kind of technique. You can directly split the string, and after printing the string, splitting the string, now you can iterate through the each string in an array. And then what I am doing, I am going through this one. Oh, not let me indent properly. Yeah, so now I have created one flag variable of boolean type, and it is checking each palindrome of array of particular element index, and it is calling to this function. If it is a palindrome, it will be a true, and if it is a true, that means it is a palindrome, so we can print the output here. So these are the interview question. I hope what is the problem? Did I done anything wrong? Okay, yeah, here I need to pass the things to break, no, otherwise it is coming array of integer. Yeah, so you can see here
my output is mem. Mem is a palindrome in this particular string. So mem word is a palindrome. I hope we are closing here. It's a 30 minute break we will take, then we have to start the Java class. So you can tell anything or any confusion you can ask. Anyone have any confusion, or just give me any feedback how we can improve, or anybody like want to join our private group, no, so they can also join, like some person have already joined, so we will do a part like individual some training kind of things. So we will teach the framework kind of things like Java Spring Boot framework, REST, how to develop a RESTful API. Okay, anyhow, anyone have any doubt, just ask. Kamal, I think you have joined first time. Do you have any what called doubt? Yeah, just ask, unmute yourself and ask. Okay, no problem. So we can bind up this class. Amit, Mirajul, Abhishek. Yeah, sure. Yeah. Yeah. I have pushed this all code on my Git repository. You can pull down and just check. Let me update also. Git add and try to experiment the things. Okay, try to change something and then do some stuff. This will be like, this is the learning. You cannot learn by just seeing somebody or just watching or observing something. You have to do your own, then only you can learn. Okay. Yeah, Pankaj bhai, when will you be taking next class? Actually, we are taking daily classes. These are like, today we are trying to give this open. Like Mirajul and Amir, they are taking daily classes. That are some paid. Like we are taking 5,000 rupees a charge, and then we are going through the training. And I am going to train you according to like for full fledged, like how you will crack your interview, how you will develop your framework skills, okay, and other part related, like what will be the cross question on each and everything. So that things we are going to cover. We will talk Okay. after class, Amit. Okay, anyone? Yeah. क्लास के बाद क्या पंकज? ओ अमित नहीं, अभिषेक को बोल. अच्छा ठीक है चलो फिर. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है, बंद करते हैं. ठीक है, बाय. है ना अभिषेक? ठीक है, हम बात करते हैं. गुड नाइट. ठीक है, गुड नाइट, बाय.